I am Shrafat Afzal. Today we start the topic on course code 6566 Economics and Finance in Education 2. So let's start our video today. Before that course we have discussed up to unit number 6. Now today we start the unit number 7. So we take a lecture today. In this unit number 7 we discuss about the economics, education and labor markets. This is the unit number 7 basically. Students, इस unit में हम labor markets के बारे में देखेंगे. In economics there are three types of the markets. One is the goods markets, money markets, and the third one is the labor markets. And what is the connection between labor market and education? You know that there are many types of the labor. One is the white collar labor, second one is a worker who are working in a ground, and third one is like a professor is also a labor. The definition of labor is that any person who is doing a job on behalf of his wages, तो उसको हम लेबर कहेंगे. और लेबर जो होता है उसमें ये नहीं होता कि हम our prime minister is also a labor. We can say that because the prime minister is also taking a wages from the government. And other side वो पर्सन जो किसी जगह पे जॉब करे और जॉब के बाद वो वहाँ से वेज रिसीव करे, wages ले, this is called the labor. And this market is very important market for our economy, and this is called the supply side of economy. अब देखें dear student, education और labor, there is positive relationship between the education and labor. You can say that we can say that labor market is play a vital and pivotal role in the human capital of any country, and human capital play a very crucial role in our economy because the educated labor who are working in a ground can do their work in efficiently as compared to uneducated labor. So we start our lecture today. Our lecture is consist on education and labor market. This is called the unit number 7. Introduction में हम देखें तो in this chapter we discuss about what do you mean by labor market theories, neoclassical theories. लेबर मार्केट थ्योरीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई एंड हाउ द लेबर exist in a market, and what are the main types of wages exist in a market, like a flexible wage and fixed wage. And the second one is neoclassical theories. There are many theories about the labor. We discuss about that. One is the Keynesian theory of labor market, classical theory of the labor market, and neoclassical theories of labor markets. And third one is the alternative theories. We can also discuss about that. Iron hand theories of the wages is also available in our literature, but here we discuss only the alternative theories. The radical theories that is made after the neoclassical approach, and उसको भी हम discuss करेंगे. And the last and foremost is that we also discuss about the manpower policy and education. So we start our lecture with the labor markets theories. So several purposes of the education have received different emphases over the time. Education has widely come to be seen as an aid to achieve an individual economic ambitions and national economic and social objective to determined by the states. Students, basically जब हम markets की बात करते हैं तो we have three types of the market. One is the goods market, money market, and labor market in our economy. And the labor market play a pivotal and a crucial role in our economy because in national income, the over GDP, you know that gross domestic product GDP, there is play a crucial and essential role of the labor in our GDP because the human capital is very important factor for our any agriculture sector, industrial or services sector. If the labor is educated, it adopt a new and advanced technology which increase our economic growth, and
if our labor is educated, once we can say that this educated labor adopt the technology. अगर वो technology को adopt करेगा, this can be very beneficial for our national income, and our economy is grow up and up because of we can gain objective. तो second time पे हम देखें तो there are millennium, if we discuss about the millennium goals, तो उनमें एक जो गोल है मिलेनियम गोल्स, उसमें इन्वायरमेंट क्लीन की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की। तो एजुकेशन प्ले अ पॉवर्टी रोल आफ्टर हेल्थ जो है सेकंड टाइम जो हमारा बेसिक एम एंड मोटिव्स होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो है एजुकेट यूर चाइल्ड। तो अगर हमारी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, हमारा लिटरेसी रेट हाई होगा, तो वी कैन से दैट our education and literacy rate is high, and it's mean that we are getting a maximum benefits are earning from the our rich and we over rich human capital. So we can here determine that the state of any state of the world can achieve its goal with their educated human capital. अगर स्टूडेंट हम अमेरिका की बात करें, वो से दैट there is large number of the human capital available in America and human brain, and they also innovate a new and advanced technologies which are very beneficial for their countries, and the copyright of these advancement and these achievements are, you can say that the copyrights of these innovations which are very beneficial for the American nations and America. In America, the human capital technology, we can say that America in number one state. So अगर हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट्स आर mainly the stress is on the educational characteristics of the individual and characteristics of job they enter or fail to enter. Both developed countries and less developed countries and less developed countries also associate between age, education background, occupation status and earning from employment. So अगर हम देखें तो रिलेशनशिप अगर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट वी कैन से दैट कि एम्प्लॉयमेंट की तो हम देखते हैं कि जो हमारी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़, वो ज़्यादा पे मोर एंड मोर स्ट्रेस ऑन द एजुकेशन, बिकॉज किसी भी कंट्री का अगर आप डेवलप या लेस डेवलप कहेंगे तो उस पर आप वो देखेंगे कि इस कंट्री की एजुकेशन कितनी है, इसका लिटरेसी रेट कितने परसेंट है, कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने लोग लिटरेट हैं। उनको देखते हुए किसी कंट्री की रैंकिंग हो सकती है कि दिस कंट्री इज द डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री। सो एजुकेशन प्ले अ पिवटल रोल। तो इसमें हम एसोसिएशन देखते हैं, क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एज, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड द ऑक्यूपेशन स्टेटस। तो वो वी कैन से दैट education is one of the main pillar of any country which demonstrate the country either it's developed or non-developed countries. Age, education, occupation, earning. Education, occupational status and earning from employment has been shown in wide range of study to the positive associated in a country adopt many different type of socio-economic system and different level of economic development. तो देखें स्टूडेंट्स के हम जब हम बात करते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वी कैन से दैट there is low earning, low per capita income, low education, low literacy rate, high rate of poverty. तो ऐसे हम रैंक करते हैं जब हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो वी कैन से दैट वी कैन आल्सो डिस्टिंग्विश द एजुकेशन सेक्टर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज, हेल्थ, their poverty line, and these are also factors which are play a pivotal role in economic development. So these are the social sector of any economy, and in society we can say that if the society not develop in social sector, we can say that this is called the less developed countries, because the human capital is not so much rich, and this country is not rich from the human capital. यहाँ पे जिस तरह लाइक कि पाकिस्तान में हमारे पास
देखिए पॉपुलेशन है, उसके अंदर लोग जो हैं एजुकेटेड लोग, दे आर लेस एजुकेटेड एज कम्पेयर टू जापान एंड अदर अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज। वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। इफ़ दे आर एजुकेटेड मोर एंड मोर, तो कंट्री का जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली जो है अपवर्ड मूव करता है। इट्स मीन दैट दिस कंट्री इज़ वेरी डेवलप्ड कंट्री या लेस डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे भी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक वाइटल रोल प्ले करती है एजुकेशन, अर्निंग, और इनका आपस में बड़ा पॉजिटिव एंड पिवटल रोल है। अर्निंग फंक्शन एंड पाथ एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बैकग्राउंड characteristics on the occupational attainment and earning has invariably indicate that while much of the variance remain unexplained, the large single indicator is education. सो जेंक्स ना 17 में इसने कहा कि एजुकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग, क्योंकि एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन होगी तो हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा तो हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन होंगी, इफ वही, और हमारी कंट्री जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडाप्ट करेगी विच प्ले अ पिवटल रोल इन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर इंस्टेंस, utilizing an considerable amount of data for men age between 24 to 64। तो ये एक डाटा जो है वो इससे जेंक्स ने 17 में उसने एक डाटा को यूटिलाइज किया जिसमें मैन जो है रखे गए, उनकी एज थी बिटवीन 25 to 64। अ थर्ड इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इज एज, उसमें एज भी रखी गई। एज अर्निंग राइ विद एज अप टू द मैक्सिमम एंड देन लेवल ऑफ, तो एक मैक्सिमम लिमिट 35 और अबव, वहाँ तक तो एज जो होती है जब डेवलप होती है तो बंदा अर्निंग एज की वजह से उसके, हमें अगर एक फंक्शन बनाएं, द एजुकेशन इज़ द फंक्शन ऑफ एज, एज का स्क्वायर एंड सो ऑन। एज का स्क्वायर मीन इट्स एक्सपीरियंस, जो जो बंदे की एज बढ़ती जाती है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो उसकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। तो ये देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एज, एक्सपीरियंस एंड द अर्निंग। Furthermore, the higher education level, the steeper the rise in earning. The result for both developed and less developed countries is that while average earning in wage employment is very significantly by educational level of all the age group, they do so most prominently in older age group. Although general finding is that the distribution of earning at each educational level is wider for older worker, particularly for these higher education. Finally, increment of age and the education also appear as a different effect depending upon the occupation, with both beginning large for a professional than manual worker। तो ये स्टूडेंट्स एक फाइंडिंग जो जेंक्स ने की, उसने 1779 में कहा कि एज जो है, एज प्ले अ पॉवर्टी रोल इन ओवर एजुकेशन। तो एज की वजह से जब एज फैक्टर बढ़ता जाता है तो इट्स मीन दैट योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू अप एंड अप। बट एज के साथ इफ़ योर एजुकेशन इज मोर एंड डेवलप एजुकेशन, यू हैव डूइंग you have done a MSc और MPhil और PhD, तो वहाँ पे जब आपका ऑक्यूपेशनल और एज की वजह से जो आपकी अर्निंग है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एनी मैनुअल वर्कर। एक बंदा है, अगर उसकी हम कहें कि वो मेट्रिकुलेट है और वो आर्मी में उसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और वो आर्मी में जब वो रिटायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी अर्निंग इतनी खास नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू those person who get a proper education like a master MPhil। अगर वो किसी जॉब पे एडजस्ट होता है तो उसके बाद देखेंगे उसको स्केल और पे ऑफ भी अच्छा मिलेगा और उसकी अर्निंग जो है विद passage ऑफ टाइम जो है वो बढ़ती जाएगी, बिकॉज इज अर्निंग इज इंक्रीज एंड इंक्रीज। बिकॉज जो मैनुअल एक वर्कर है उसकी एजुकेशन कम है तो उसकी अर्निंग भी लो होगी एज कम्पेयर टू एन एजुकेटेड वर्कर। एजुकेशन एंड द लेबर मार्केट्स थ्योरी। अब हम अगर एजुकेशन और लेबर मार्केट थ्योरी को, तो मैं डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा कि देयर आर थ्री सेक्टर इन इकोनॉमी। वन इज द एजुकेशन सेक्टर, लेबर मार्केट ऑफ इकोनॉमी, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट इन विच वी डिस्कस अबाउट द मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, लाइक इट इज द प्योरली कंसर्न बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। Second one is the goods market in
which we have discussed, y is equal to c plus I plus g, where goods and services are produced. And third one is the labor market, and labor market is the supply side of any economy, which labor जो है वो सप्लाई साइड से होता है, और लेबर जो है वो हमें एक वर्किंग आवर देता है, और ये वर्किंग आवर हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। थ्री मेजर अप्रोचेज में भी तो अब हम एजुकेशन एंड जब लेबर मार्केट की बात करते हैं तो थ्री मेन मेजर अप्रोचेज में भी आइडेंटिफाइड। फर्स्ट, देयर इज अप्रोच ग्राउंडेड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ operate in a such a way that it is directly add to the individual cognitive ability। तो एजुकेशन सेक्टर जो है, फर्स्ट अप्रोच ये है कि वो जब एक बंदा एजुकेटेड होगा तो वो किसी सेक्टर में जब वो जॉब में जाएगा तो वो प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड पॉजिटिव रोल करेगा, क्योंकि वो कॉग्निटिव अप्रोच, अपनी मेंटल एंड फिजिकल अप्रोच को यूज़ करके उस कंट्री के लिए या उस जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, विच प्रोड्यूस लॉट एंड लॉट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर कंट्री। दोज एबिलिटीज रेंज फ्रॉम बेसिक immensely and literary at one of the end the scale to great capacity for the logical and analytical reasoning at other। तो ये बंदा जो है इसके पास लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगी, जब ये कोई भी वर्किंग करेगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, तो ये जो है अपने मेंटली अप्रोच को, पॉजिटिव अप्रोच को यूज़ करके, लॉजिकल अप्रोच को यूज़ करके जब वो किसी फील्ड में जाएगा, तो दिस अप्रोच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द एनी कंट्री, बिकॉज ये जो है लो लेस टाइम में मोर प्रोडक्टिविटी, इसकी एफिशिएंसी एबिलिटी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू एनी ले मैन और ऑर्डिनरी जो एक मैन होगा, जिस तरह एक मैनुअल वर्कर होगा उसके मुकाबले में ज़्यादा इसकी थिंकिंग अप्रोच होगी। इस थिंकिंग अप्रोच इज़ हायर एज कंपेयर टू मैनुअल वर्कर, एंड इज डूइंग इज वर्क वेरी neat and clean way, which is very beneficial for their country। These increased abilities lead to higher individual earning। तो आप देखें ये बंदा जो होगा, ये किसी स्टेज पे जाएगा तो ये एज ए लीडर के तौर पे काम करेगा, एज ए गाइडर के तौर पे काम करेगा। इसकी जो वर्किंग आवर जो होंगे वो कम होंगे, बट इसकी एबिलिटी जो है इसको अर्निंग हायर करेगी। लाइक यू कैन से दैट एनी प्रोफेसर हु join his job like after a master or MPhil degree, as compared to any person who is getting only a matriculate degree and he joined the Pak Army or any other field। तो अब देखें उसका और एक ऑफिसर का देयर ह्यूज डिफरेंस होगा, क्योंकि वेज अर्निंग में भी इनका डिफरेंस होगा और इनकी थिंकिंग एंड मेंटल पावर जो होगी उनकी अप्रोच में भी डिफरेंस होगा। Second approach has maintained that school are effective in changing the person, but that the important change are not those of cognitive abilities। तो सेकंड फर्स्ट अप्रोच तो ये है कि वो कहते हैं कि जब एक बंदा जाके स्कूलिंग करेगा, हायर एजुकेशन गेन करेगा, तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव होंगी, which is a very play a positive role in his earning। but second approach ये करती है कि maintain that the school are effective in changing a person but important change are not these of the cognitive। वो person को change करेंगे। class background is here seen as the major determinant of occupation and income, and the educational system is said to be operated in such a way that develop the different set of productivity related to personality traits among the children from different social classes। तो सेकंड अप्रोच ये करती है कि वो जो एक स्टूडेंट जब एजुकेशन गेन करेगा तो वहाँ पे उसकी जो मेंटल अप्रोच होगी उसमें प्रोडक्टिविटी आएगी, उसकी पर्सनालिटी में ग्रूमिंग आएगी, विच प्ले वो जो पर्सनालिटी उसकी ग्रूम होगी जिसकी वजह से वो पॉजिटिव थिंकिंग करेगा, और उसकी ये सेकंड अप्रोच है। These both legitimize the contribution of jobs, which simply perpetuates the existing structure of social class and increase the productivity of the all classes in their ascribed occupation। Trade provided by school in an individual who will fill low pay jobs include punctuality, obedience, and respect for the authority, while these of the higher status occupation सेल्फ रियलाइंस, एबिलिटी टू मेक द डिसीजन। तो वो कहते हैं कि जब ये स्कूलिंग करेगा उसके बाद इसके अंदर पंक्चुअलिटी आ जाएगी,
और ये रिस्पेक्ट करेगी अपनी अथॉरिटीज़ को। और उसके बाद जब ये रियलाइंस एबिलिटी, इसके अंदर डिसीजन पावर आ जाएगी, और ये जो है ना इजीली किसी भी सेक्टर के अंदर अगर कोई चीज़ डिसाइड करनी हो, ही विल बी एबल टू डिसाइड एनी मैटर्स इन क्विक वे एंड क्विक मैनर्स। और ये जो है ये कमांड भी कर सकेगा जो अनएम्प्लॉयड या अनएजुकेटेड लेबर्स हैं, जिसको हम कहते हैं ले मैन, जो लेबर्स होते हैं मैनुअल लेबर्स को ये कमांड भी करेगा, और उनको अच्छी तरीके में इतनी एबिलिटीज़ होंगी कि उनको गाइड्स भी करेगा। फाइनली देयर इज़ द सेट ऑफ approach which directly questions the view that through the development of either cognitive ability or personality traits, school increase the potential productivity of individual. Rather, the education system is said to be act simply as a selection mechanism to sort out these who possess non-school related characteristics. तो ये दोनों अप्रोचेज, एक अप्रोच हमें कहती है कि एक बंदे की जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगी थ्रू डेवलपमेंट आइदर द कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। और सेकंड जो अप्रोच हमें कह रही है, जो थियोरेटिकल अप्रोच है, वो कह रही है कि स्कूल इंक्रीज द पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और उसकी वजह से जब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो वो जो है प्ले अ पिवटल रोल इन देयर डेवलपमेंट। और वहाँ पे उसकी वजह से ये होगा कि जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इंडिविजुअल जो है इजीली अपने जो पर्सनल जो मैटर्स है उनको टैकल करेगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ फ्रूटफुल फॉर द एनी ऑर्गेनाइजेशन। Rather, the education system is said to be act simply as a selection mechanism to sort out those who process the non-school related। तो जो नॉन स्कूल रिलेटेड जो इश्यूज हैं, मैटर्स हैं, उनको वो ये सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दीज आर द एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स एंड प्ले अ पिवटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, सच एज द इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन विच आर आल्सो some way connect to productivity। school itself does not affect productivity। तो ये जब स्कूलिंग करेगा तो वहाँ पे इसमें मोटिवेशन आएगी, और इसके स्टाफ के अंदर इंटेलिजेंस आएगी। इफ़ ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, वो अपने जो वर्कर्स होंगे, जो मैन जो आपके ले वर्कर होंगे, उनको इजीली उनको मोटिवेट करेगा, उनको हाईलाइट करेगा कि दिस वे वी कैन गेट अ मोर एंड मोर आउटपुट फ्रॉम डूइंग अ वर्क। उनके अंदर एक स्किल्स, उनको एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ये ही कैन डू हिज वर्क इन वेरी प्रॉपर मैनर्स, और जो प्रोडक्शन है ये गेन फ्रॉम डिफरेंट जो वर्कर्स हैं उनको पर डे के हिसाब से उनसे प्रोडक्शन भी गेन करेगा। तो दीज टू टाइप ऑफ अप्रोच आर यूज in labor markets। The second one is the neoclassical theory. The neoclassical, in orthodox of neoclassical, dear students, basically our economics is start from the classical approach, in which classical say that economic can be start from supply side economy, and after classical approach the basically founder of economics is Adam Smith। you know that after that Adam Smith 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो वहाँ पे कीनेजियन अप्रोच यूज़ हो रही थी कि इकॉनमी स्टार्ट फ्रॉम द डिमांड साइड। आफ्टर दैट जो कीनेजियन के ऊपर जो क्या नाम है क्रिटिसिज्म हुआ, वो जो नए इकोनॉमिस्ट थे उनको यू कैन से दैट आफ्टर 19th सेंचुरीज उनको न्यू क्लासिकल और न्यू कीनेजियन एंड न्यू क्लासिकल एंड न्यू। तो न्यू क्लासिकल जो है लेबर की तरफ जो डिफाइन कर रहे हैं, या लेबर मार्केट की जो थ्योरीज को वो किस वे से और किस सेंस से डिफाइन कर रहे हैं। इन ऑर्थोडॉक्स एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स द थ्योरी ऑफ लेबर मार्केट इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिमांड। तो ये MP मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर MPD थ्योरी है कि वो कहते हैं कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बेसिकली उनकी अप्रोच में ये है कि जो है लेबर को अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन लाइक 1 2 3 4 एंड 5, तो एवरेज टाइम मार्जिनल मेन यानी वी कैन से दैट कि एडिशनल यूनिट
how much additional unit of labor produce and produce. If production of this labor is increased and increase, it's give a more and more reward toward this production. So this is the marginal productivity theory of demand, reflect that the profit maximizing behavior of the employee. अगर मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, लाइक एवरी इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस करेगा मोर एंड मोर यूनिट है लेबर, तो उसकी वजह से उस लेबर की मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इट्स मीन दैट कि प्रोड्यूसर का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। किस तरह इंक्रीज होगा कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर मार्जिन प्रोडक्टिविटी आई होगी जब उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन दैट ओवर इनपुट इज आउटपुट इज इंक्रीज। आउटपुट इंक्रीज होगी तो यू नो दैट प्रोड्यूसर का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। रेवेन्यू होता है वह प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन हो करेगा, तो उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। कास्ट मिनिमाइज हो जाएगी क्योंकि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हाई है, तो उसकी वजह से उसका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम जो है रेवेन्यू मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ labor. The supply theory based on the utility maximization of the work and the notation of competitive equilibrium. Following on the form of the composition of demand for goods, individual firms derive from demand schedule for the labor related amount of the labor demand and different wages. तो क्लासिकल की ये भी अप्रोच है न्यू क्लासिकल की कि वेजेस को जो है फ्लेक्सिबल रखा जाए, तो देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। तो जब वेजेस फ्लेक्सिबल होंगी तो जब जो मार्केट के अंदर जो है आउटपुट प्राइस बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो आप लेबर की प्राइस को भी बढ़ाते जाएंगे। लेबर की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी वजह लेबर मोर एंड मोर वर्किंग करेगा, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एंड द लेबर इज एम्प्लॉयड अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू इंडस्ट्रियल वेज। तो वो जगह जहाँ पे वहाँ तक लेबर की आप हायरिंग कर सकते हैं जहाँ तक लेबर उसकी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी वेज के इक्वल होगी। अगर उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी अबव द वेज रेट है, इट्स मीन दैट इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर को मोर एंड मोर प्रॉफिट मिलेगा तो वो उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। जहाँ पे वो करते 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 इतने लेबर हायर कर देगा कि लेबर की जो वेज रेट है उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के इक्वल आए, तो जहाँ पे किसी एम्प्लॉयर को मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट मिलेगा और उसके बिलो अगर जो लेबर अगर वो वर्कर को हायर करेगा तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी इज़ लोअर एज कम्पेयर टू देयर वेज रेट। तो जब मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम होगी और वेज रेट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयज़ को जो है लॉस हो जाएगा। इन अर्ली मॉडल द लेबर वाज रिगार्डेड एज अ homogeneous. With the development of human capital theory, homogeneity is no longer assumed and labor. तो homogeneity का मतलब है डियर स्टूडेंट्स के लेबर इज homogeneous में मतलब एवरी लेबर इज एफिशिएंसी देयर एबिलिटी इज इक्वल टू अनदर लेबर। बट ऐसा नहीं होता कि लेबर जो है homogeneous नहीं होते, हेट्रोजेनिटी भी उनमें पाई जाती है। बट इन दिस थ्योरीज इन अर्ली, इससे पहले जो मॉडल में ये थ्योरी डेवलप की गई है, जो लेबर है वो homogeneous है, एवरी लेबर एबिलिटी एंड देयर स्किल इज इक्वल टू अनदर लेबर। बट ये अर्ली थ्योरीज में था। विद द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन कैपिटल थ्योरीज, जब वुमेन कैपिटल थ्योरीज में डेवलपमेंट आई तो होमोजेनिटी इज नो लॉन्गर। अब होमोजेनिटी का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहा है। लोग अब जो है अब लोग अज्यूम नहीं करते हैं कि एवरी लेबर इज होमोजेनियस, मे बी हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस का मतलब है कि एक लेबर की एफिशिएंसी स्किल्स डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर लेबर, इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी भी डिफरेंट है अदर लेबर से। एंड लेबर this is called the neoclassical theory in which we discuss about the what is meant by the labor and labor, how can we hire a labor for ourselves. According to this theory we discuss about that the labor is higher on margin productivity of the labor, margin productivity of labor की बेस पे हम लेबर को हायर करेंगे। The alternative theories की जब हम बात करें, the next theory is the alternative theories is argued that labor market is characterized by the number of segments
each of which has different condition of employment and recruits from among the separate section of labor force. To some theories, the types and the number of jobs in each segments and determined by the technological requirement to other segmentation. तो अब जिस तरह वो पुरानी थ्योरीज ने बात की कि लेबर जो है ह्यूमोजीनियस है और इसमें ह्यूमोजीनेटिक का फैक्टर है, ये कहते हैं कि हर लेबर की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट सेक्शन में फॉल्स करती है. सम लेबर फोर्स जो है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं डिटरमिन बाय द टेक्नोलॉजी. तो लेबर की जॉब्स हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे वो डिपेंडेंट करती हैं. टू अदर segmentation occur as the result of conscious action by the capitalists to divide the worker class and reduce class concise. तो आप देखें अब जो है दो क्लासेस में एक देयर आर टू क्लास इन द इकोनॉमी इस थ्योरी में डिस्कस किए गए. वन इज़ द वर्कर क्लास एंड अदर वन इज़ द एम्प्लॉयर क्लास. तो एम्प्लॉयर क्लासेस के अंदर जो वर्कर क्लास है उसको भी डिफरेंट सेगमेंट्स में उनकी जॉब असाइनमेंट्स के लिहाज से डिफरेंट सेगमेंट्स में अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट डिफरेंट सेगमेंट में तकसीम किया गया है. इस तरह जो हायर क्लास है वो तो आपकी एम्प्लॉयर क्लास है. द लेटर व्यू हैज़ टू इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन. फर्स्ट एजुकेशन एक्सपेंशन among these group consists to secondary labor markets characterized by low pay, insecurity and poor working condition will not lead to be increased earning. So इस थ्योरी में जो फर्स्ट एजुकेशन जो है वो एक्सप्रेशन among those groups उनमें to secondary labor markets characterized by low pay, insecurity and पुअर वर्किंग कंडीशन विल नॉट बी लीड टू इंक्रीज द अर्निंग. ये एक तो ये कहा गया है कि जब आपकी अगर पुअर वर्किंग कंडीशन है, इनसिक्योरिटी है जॉब में या फिर पे लो है, तो वहाँ पे भी आपकी अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ नहीं होंगी. जब अर्निंग इंक्रीज़ नहीं होंगी तो आपकी कैपेबिलिटी लो होगी. कैपेबिलिटी लो होगी तो आप यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आपने जो है अपनी वर्किंग बहुत अच्छी की हुई है, आपने एजुकेशन गेन की हुई है, बट उस तरह की आपको वेज रेट नहीं. सेकेंड व्यू लिंक अस विद द अप्रोच टू एजुकेशन. द जॉब कंपटीशन मॉडल इज बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी which surrounds the hiring of labor. Given the problem of accurately predicting the future performance of job application, the fact is most job specific. तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है. तो एक तो ये है कि जॉब्स आपको मिल रही हैं लेकिन उनका वेज रेट लो है या जॉब इनसिक्योरिटी है. सेकंड वन इज़ द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स फॉर द हायरिंग द लेबर. जब लेबर की हायरिंग कम होगी तो उसकी प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब एप्लीकेशन फैक्ट दैट मोस्ट जॉब स्पेसिफिक. Potential workers come onto the labor market with a variety of background characteristics, the most important of which is the amount of education. तो अब देखें जो हमारी एक लेबर की मार्केट्स होती है, लेबर मार्केट्स के अंदर मैंने आपको पहले जो डिस्कस किया है, नॉट ओनली वी कैन से दैट लेमैन इज अ लेबर इज एनी पर्सन who is working anywhere and getting a job wage rate is called the labor. तो वो लेबर जो है वो पोटेंशियल लेबर जो होते हैं वो लेबर मार्केट्स में आते हैं, उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ द अमाउंट ऑफ एजुकेशन. उनमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. वाल दीज आर द इनसफिशिएंट टू अलाउ द वर्कर टू इमीडिएट परफॉर्म इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, दे so affect the cost of training which usually acquire formally or informally on the jobs. तो जो एजुकेशन लेबर होता है उसको एजुकेटेड लेबर को वो प्ले अ पिवटल रोल, और इमीडिएट जो वर्कर होता है विच इज़ अमाउंट ऑफ एजुकेशन उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो उसको जब जॉब हासिल गेन करने के बाद एकदम जॉब नहीं मिलती बल्कि उसको ट्रेनिंग की कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है विच इज़ यूजली एक्वायर्ड फॉर्मली, जो उसने जॉब के लिए फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से हासिल किए. पोटेंशियल वर्कर आर देन रैंक इन अ लेबर क्यूरी अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड ट्रेनिंग कास्ट.
तो ये जो पोटेंशियल वर्कर है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बाद लोग जो होते हैं कंपलसरी एजुकेशन गेन करने के बाद जॉब सेक्टर में चले जाते हैं, बाद इंटरमीडिएट करते हैं, सम आर द ग्रेजुएट एंड सम आर द पोस्ट ग्रेजुएट अकॉर्डिंग टू देयर जॉब ट्रेनिंग कास्ट। उसके मुताबिक फिर उसको पोटेंशियल वर्कर को रैंक किया जाता है कि अगर एक लेबर है लेबर है तो उसको मैट्रिकुलेशन के बाद फिर एक एजुकेटेड पर्सन लाएगा जिसने एमफिल या एमएससी किया हुआ है, तो पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, उसको उसकी ट्रेनिंग की कास्ट के मुताबिक उसको एक्सपेक्टेड उसको एबिलिटी करके उसको रैंक किया जाएगा और उस पर उसको जॉब दीजिए। बेस्ड ऑन सच क्यूरीज जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद द एम्प्लॉयर्स offering higher productivity job to those at the head and work down। तो जो हायर एजुकेशन वाले होंगे उनको हाई जॉब मिलेगी एंड एज कम्पेयर टू द लोअर एजुकेशन वाले उनको लो जॉब मिलेगी अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन, यानी उन देयर एजुकेशन उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। इन कंट्रास्ट टू द वेज कंपटीशन मॉडल विच सीज दैट लेबर मार्केट एज अ मार्केट फॉर मैचिंग अ ट्रेन इंडिविजुअल विद द ट्रेन लेडर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो वेजेस भी इसी तरह से डिस्टिंग्विश होंगे जिस तरह वर्कर को रैंक किया जाता है कि कोई हाई वर्कर है जिसने हायर एजुकेशन गेन की हुई है उसको हाई जॉब एज कंपेयर टू उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एनी उसको इस तरह की जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाए एज कम्पेयर टू नॉन एजुकेटेड वर्कर। इस तरह वेजेस में भी इनका डिफरेंस होगा कि दो पर्सन हु गेटिंग अ मोर एंड मोर हु गॉट अ मोर एजुकेशन उसको ज़्यादा अच्छी वेजेस दी ऑफ़र की जाएंगी एज कम्पेयर टू दोज वर्कर्स हुज एजुकेशन इज़ लो, तो उनको वेजेस जो है लो वेजेस ऑफ़र की जाएगी। द रेडिकल थ्योरी ऑफ द segmentation, एक थर्ड थ्योरी जो फर्स्ट है थर्ड मोस्ट थ्योरी is the radical theory। In this radical theory the segmentation in the labor market is seen as a way in which employers are able to maintain control over production। इसमें जो एम्प्लॉयर्स की प्रोडक्शन को देखा जाता है कि हाउ मच द एम्प्लॉयर इज प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट वे एंड हाउ इट कंट्रोल द प्रोडक्शन। फर्स्ट डिवाइड द लेबर फोर्स इनटू सेल्फ कांस्टेंट आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स। सबसे पहले लेबर को डिफरेंट ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया जाएगा विद डिफर इन सोशल स्टेटस इनकम एंड सो ऑन। प्रिवेंट द यूनिफिकेशन ऑफ द वर्कर क्लास एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्लास कॉन्शियसनेस अमंगस्ट वर्कर। तो उनको क्लास के लिहाज से उनको जो है फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर इनकम देयर सोशल स्टेटस। लाइक एक प्रोफेसर का जो सोशल स्टेटस है एज कम्पेयर टू एनी ले वर्कर उसके मुकाबले में ज़्यादा है। तो इस तरह इसको एक डिफरेंट उनकी एबिलिटीज़ के लिहाज से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। डिवाइडिंग वर्कर एंड रीडिफाइन द क्लास ग्रुप इन दिस सीन हैज अ वे ऑफ forestalling the ultimate threat to capitalist model of production। तो फिर उनको डिवाइड करके उनको डिफरेंट असाइनमेंट टास्क की जाएंगी कि जो लो एजुकेटेड लोग हैं उनको जो है लो जॉब्स और जो हाई एजुकेटेड लोग हैं उनको हाई जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस उनको दी जाएंगी और उसके मुताबिक उनकी जो है ना वो प्रोडक्शन के अंदर वो इन्फ्लुएंस करेंगे। लाइक वन इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अदर वन ऑफ द वर्कर। The head of department is main and foremost duty is that is punctuality, look after the workers and so on। तो ये हमारे पास this is called the radical theory of segmentation। Secondary segmentation enable employers to control worker in that it provide the way of maintain the production। वो ऐसे वर्कर को कंट्रोल करेगा कि उसने मेंटेन करना है प्रोडक्शन को। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो वो उनके अंदर जो है एबिलिटीज उसके अंदर स्किल्स होंगी, मोटिवेशनल स्किल्स अपने वर्कर को मोटिवेट करेगा प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करें और मिनिमाइज करें और कॉन्स्टेंट। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द कैपिटलिज्म द फर्म विल बी एबल टू मेंटेन द प्रोडक्शन बाय द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। तो पहले जो अर्ली स्टेज था उस वक्त फर्म जो थी डायरेक्टली जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती थी, बट आफ्टर दैट द एम्प्लॉयर्स वेल इन frequent and close contact with the workers so were able to extract their power directly।
The development of the monopoly capitalism mean, however, the direct control has become a more difficult. फिर वो जो है डायरेक्ट कंट्रोल मोर डिफिकल्ट हो गया, इससे मोनोपोली क्रिएट हो रही थी। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द ILO इंटरनेशनल लेबर लॉ के मुताबिक दिस इज द वायलेशन ऑफ एनी स्टेट और एनी लेबर मार्केट। तो इसको उन्होंने जो है इसको इस करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो लेस किया, जो एम्प्लॉयर्स की पावर थी उसको लेस करके। द डेवलपमेंट ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म मीन्ड however the direct control has become much difficult. The senior management has become a remote for production process with the introduction of hierarchies of the administration and support. तो फिर उसके लिए फिर जो है वर्कर क्लास में से जो अपर क्लास है उसको ये कंट्रोल दिया गया, और वो कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरवाइजरी के थ्रू वो कंट्रोल करती है। दिस इज़ वेरी इजियर फॉर द एम्प्लॉयर्स कि वो अपने वर्कर को हायर करें, एजुकेटेड वर्कर को हायर करें। दीज एजुकेटेड वर्कर आर प्ले अ pivotal or important role for control their production and also supervise low worker or the worker who are working in a field, तो उनको ये कंट्रोल कर सकते हैं। दीज वर्कर जो सुपरवाइजरी वर्कर होंगे ये एजुकेटेड होंगे, वाइट कॉलर वर्कर होंगे, दे लुक आफ्टर देयर वर्कर्स एंड आल्सो they provide a guidance to workers ke how much their production of factory and increase or decrease. The radical theory of segmentation. Education plays a two important role within the radical framework. Education जो है there are two type of role play education in their radical framework. First one is the education develop a set of attitude and personality characteristics that are consist with and reflect these required a large scale bureaucratic firm. तो एक रोल ये प्ले कर रही है एजुकेशन कि वो क्या कर रही है कि वो लोगों के अंदर जो सुपरवाइजरी स्टाफ होगा उसकी पर्सनालिटीज़ में ग्रूमिंग, उनका एटीट्यूड जो होगा अच्छा होगा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से ग्रूम करेगी, और वो उनमें ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म आएगी जो दूसरे वर्करों को इजीली कंट्रोल कर सकती है। स्कूल इनकरेज द डिसिप्लिन एंड रिवार्ड दीज स्टूडेंट्स हु रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिव टू नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द सिस्टम। तो वो स्कूल जो उनकी स्कूलिंग है उनको डिसिप्लिन सिखाती है, फिर उनको वैल्यू सिखाई जाती हैं कि सोसाइटी के अंदर आपने कैसे रहना है और कैसे अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है, कैसे आपने लोगों को कंट्रोल करना है। लाइक यू नो दैट ओवर CSP ऑफिसर हाउ लाइक AC and DC हाउ कंट्रोल द वर्कर्स और पब्लिक को उनको कैसे कंट्रोल करना है। उन्होंने ये जन उनके अंदर स्किल्स आती हैं, दे गेट एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट इंटर सेक्टर ऑफ एजुकेशनल सेक्टर, और वहाँ से वो स्किल और ग्रूम करके आते हैं जिसकी वजह से वो सोसाइटी के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। दोज हु डू नॉट वेल एट स्कूल विल they have a right personality and behavioral traits necessarily for working in a primary segment. तो दो जो एजुकेशन नहीं गेन करते हैं उनको फिर प्राइमरी सेक्टर में जॉब करनी पड़ती है, और उनके ऊपर कंट्रोल जो होता है वो सुपरवाइजरी स्टाफ जो एजुकेटेड हाईली एजुकेशन लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं। सेकंड, एजुकेशन इज यूज्ड टू रीइंफोर्स द क्लासिकल डिफरेंसेस बिटवीन वर्कर। तो अब एजुकेशन जो होते हैं वर्कर के दरमियान में ह्यूज डिफरेंस पैदा करती है अकॉर्डिंग टू देयर यानी टास्क असाइनमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब वेजेस डिफरेंशियल भी करती है। It is the argued that school in low income areas develop in their student attitudes and type of behavior that are different from those developed by school high income areas. In this way, the education can use to reflect the type of behavior consistent with particular type of job. तो देखें जो डेवलप एरियाज़ के स्कूल होते हैं लाइक बीकन हाउस और रोड स्कूल, उनके जो बिहेवियर और एक लेस डेवलप का एरिया जो है उसका बिहेवियर डिफरेंस होता है। इन दिस वे एजुकेशन कैन बी यूज टू रिफ्लेक्ट द टाइप ऑफ बिहेवियर, यहाँ पे वो बिहेवियर कंसिस्टेंट विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब्स के जो एक रूट स्कूल का पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट्स है उसको कौन सी जॉब सूट करती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ा हुआ। तो ये भी एक प्ले अ पिवटल रोल इन एजुकेशन। मैन पावर पॉलिसीज एंड एजुकेशन। तो हाउ
many type of which type of policies is performed by the education and manpower policies in education ILO according to the international law of labor. The three labor markets theories present about provide very different policy prescription to deal the labor market problem such as poverty and distribution of income. तो वहाँ पे भी आपने देखा कि जो लो एजुकेटेड पर्सन होंगे उनकी अर्निंग लो होगी, वो पॉवर्टी लाइन के अराउंड होंगे एज कम्पेयर टू दोज पर्सन हु गेट हायर एजुकेशन, उनकी अर्निंग हाई होगी तो वो अबव द पॉवर्टी लाइन होंगे, उनको पॉवर्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ द लेबर मार्केट्स पुट emphasize upon the supply side of market and the worker personal characteristics. तो आप देखें वो क्लासिकल थ्योरी जो है वो हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स आल्सो डिस्कस अबाउट द सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी. तो लेबर जो इंजेक्ट करते हैं मार्केट में, दिस इज कॉल्ड द सप्लाई साइड फैक्टर विच इंक्रीज ओवर लेबर जो है हमारी प्रोडक्टिविटी को, इंक्रीज द वर्कर अर्निंग पोटेंशियल रिक्वायर इम्प्रूव इन वर्कर की जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है उसकी वेज रेट को भी इंक्रीज करेगी, विच इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर. जब प्रोड्यूसर का रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी वेज रेट भी बढ़ जाएगी, विच इज टर्न टू बी अचीव थ्रू इम्प्रूवमेंट इन द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड अदर ह्यूमन फैक्टर इन लो इनकम वर्कर. तो ये ऐसा ही हो सकता है कि अगर हमें मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किसी भी वर्कर की इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि उसको लेबर को एजुकेट करना पड़ेगा. अगर इफ लेबर इज एजुकेटेड देन वी से दैट our earning is improved. The type of policies have indeed represent the dominant approach to manpower policy in both Europe and Union. So 1950s these type of policies are very play a pivotal role and important role in the Europe and United States. In 1950s reflect the dominance of human capital theory in labor economics such a time. तो वहाँ पे ये देखें लेबर स्किल लेबर जो है वो डोमिनेंट पॉलिसी थी, क्योंकि एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज आल्सो डिपेंड अपॉन द एजुकेटेड एंड स्किल लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज विच यूज देयर सेंस एंड ह्यूमन यानी एनालिटिकल स्किल्स विच आल्सो इम्प्रूव अवर प्रोडक्शन. Indeed, it is along fail of these human capital oriented policies that are provided dual labor market and radical economists with evidence against the new classical theory. तो अब ये जो दूसरे फेलियर ऑफ दीज ह्यूमन कैपिटल ओरिएंटेड पॉलिसीज को, ये जो रेडिकल थ्योरीज हैं या न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मार्केट को, ये इन्होंने रेडिकल इकोनॉमिस्ट विद एविडेंस फेल किया है. बोथ द अल्टरनेटिव थ्योरीज रिजेक्ट द व्यू दैट मार्जिनल adjustment to education and other component of human capital can have an impact on the worker productivity and earning. तो ये इन रेडिकल थ्योरीज ने क्लासिकल थ्योरीज को फेल करने की कोशिश की है कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर जो है वो ही प्रोडक्टिविटी या अर्निंग को नहीं बढ़ा सकती, बल्कि अदर देन फैक्टर भी हो सकते हैं. विद इन द लो सेगमेंट एजुकेशन हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वेजेस ऑन एम्प्लॉयमेंट. सो हमारे यहाँ भी आपने देखा यू नो दैट लोग कहते हैं कि जो होता है देयर इज़ नो लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड अर्निंग. ऐसे लोग भी हैं जो बड़े अनएजुकेटेड हैं बट वो बिलियनर्स हैं, ऐसा भी है. लेकिन ये है कि इसने ये रेडिकल थ्योरीज ने जो फेल किया है कि लेबर की जो अर्निंग होती है और उसकी वेज रेट यानी उसकी एजुकेशन ऑफ वर्कर जो है वो वेज रेट आप उसमें इनका हम नहीं कह सकते हैं या वेज और एजुकेशन हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वेज एंड एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट और वेज में एजुकेशन का ही रोल नहीं हो सकता. सो इम्प्रूविंग इन द लेवल ऑफ एजुकेशन वर्कर वुड नॉट इम्प्रूव देयर इनकम इन सेकेंडरी सेगमेंट ऑफ जॉब और एम्प्लॉयमेंट एबिलिटीज़. तो वो कहते हैं कि एजुकेशन की वजह से ही आपको ना एम्प्लॉयमेंट आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना वेज रेट कर सकते हैं. इन वर्कर दैट इज सेकेंडरी सेगमेंट रिमेन और लो वेजेस लो स्टेटस एंड करेक्टरिस्टिक्स. वो कहते हैं कि आपकी जो ये हो सकता है कि आपकी जो लो स्टेटस होगा और लो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, लेकिन ये है कि वेजेस का और एजुकेशन का कोई लिंक. दिस रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर ब्रेकिंग डाउन द इंस्टीट्यूशनल बैरियर दैट रिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी. द ओनली पॉलिसीज दैट वुड बी significant impact on improving the position of law.
The importance of these theories for policies, however, lies in the fact that they have alternative explanation of relationship between given set of variables. It is important to establish, therefore, with the explanation provide the most accurate reflection of labor market reality. Existing the empirical tests have tend to examine two questions: what impact does the education on training on the earning of low segment worker, and what is the extent of mobility between. तो ये दो क्वेश्चन उन्होंने रेज किए हैं कि ये थ्योरीज कहती हैं कि जो एजुकेशन है और अर्निंग का आपस में कोई इतना पॉजिटिव लिंक नहीं है, बल्कि अदर देन द रेड्यू जो होती हैं ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर जो है अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्होंने दो क्वेश्चन रेज किए हैं जो इन अप्रोच में कि वन इज़ दैट कि what impact does the education and training on the earning of low wages workers, and what is extent of the determination of mobility between segments of labor market. तो एजुकेशन कैसे मोबिलिटी लाती है लेबर मार्केट्स के अंदर, और एजुकेशन और अर्निंग का क्या, लो अर्निंग जो है लो सेगमेंट वर्कर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर वो एजुकेशन गेन करें या ट्रेनिंग करें। तो इन समरी द रोल ऑफ एजुकेशन इन explaining however the labor market operate represent one of the main area of disagreement that labor market theories, the extent to which the human capital theory claim the education can be used to explain the labor market process, its description of the structural role played by the education, and the importance of education, a policy to direct at social problem, represent the serious challenges and orthodoxy. तो ये समरी में हमने यही देखा कि एजुकेशन जो है इज एक्सप्लेनिंग ओवर द लेबर मार्केट्स, तो लेबर मार्केट्स को एक्सप्लेन करती है, बट ये है कि ये थ्योरी दिस एक्सटेंड टू बी ह्यूमन कैपिटल थ्योरीज क्लेम दैट एजुकेशन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लेबर मार्केट प्रोसेस। तो एजुकेशन लेबर मार्केट प्रोसेस के बारे में बताती है कि हाउ द लेबर इन्वॉल्व इन अ market and how they inject in the markets and also perform their duties. Its description of the structural role play education, यानी play education का एक structural role है and importance of education as a policy tool direct to social problem like we know that over ये education जो है एक social problem है कि हम human capital को कैसे improve करें, हमारा human capital बढ़े, हमारा literacy rate बढ़े, ये हमारे लिए serious challenge है। और क्लासिकल जो थ्योरी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजेस हैं उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई होप this video is this lecture is very beneficial for your future. So in this lecture, if we see the summary of this lecture, we discuss about the new classical approach, radical approach, and the human capital approach, how we can develop a human capital, and what is the impact what is the impact of human education on the labor wages. तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया और आई होप दिस लेक्चर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।